Assalamu alaikum. I'm Mirza Zuhaibig, and I'm going to explain the next half part of the chapter number 18. The chapter name is reproduction. So let's start with the name of Allah Almighty. Bismillah Rahman Rahim. So what do you say about this reproduction? Next part of this reproduction chapter. It includes the different topics. For example, the topic of the female reproductive cycle. For example, the process of birth, and the last one as a sexually transmitted disease. So first of all, अगर आप इस diagram में देखें तो here is the presence of the ovary, that is a human female ovary. First of all, these primary follicle cells are produced with when these follicle cells are produced, there is a growing follicle that develop in the primary spermatocyte. Primary oocyte. This primary oocyte, when released from the this follicle cell, it is this process is called as ovulation. So ovulation, after ovulation, the follicle cells change into the yellowish glandular structure that is known as a corpus luteum, and this corpus luteum produce the progesterone hormone, that is a pregnancy maintaining hormone. So ये हमारे पास आ जाता है pregnancy maintain hormone जो है. इसके बाद जो है next one ये इसकी phases हैं. For example, ये starting phase है रिप्रोडक्टिव साइकिल की, और एक टाइम आता है ये मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे है, फिर उसके बाद पॉलिफेशन फेज है, देन सिक्रेटरी फेज है, और फिर से मेंसेस यानी मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है. सो इट वेरीज द डिफरेंट डेज, इट इंक्लूड द डिफरेंट days, and so now that's MCQ number first. The first MCQ that's related to this chapter, or you can say that includes in this chapter, that is about what? Fruit ripening in plants is often accompanied by a burst of respiratory activity. जो fruit ripening होती है बड़ी तेजी से, आपने देखा होगा कि जो fruits जो है वो ripe कर जाते हैं एक पौधे के ऊपर लगे हुए, तो वो burst of respiratory activity वैसे होती है. उस burst of respiratory activity को क्या बोलते हैं? Either this one is a fruit setting, seed dormancy, climacteric, और पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट है विदाउट फर्टिलाइजेशन. सीड डॉर्मेंसी जो है इनएक्टिव और अनफेवरेबल कंडीशन. फ्रूट सेटिंग, रिटेंशन ऑफ द fruit on the walls of the where it grow. So climacteric is a condition, that is a fruit ripening in plants that is accompanied by the burst of respiratory activity. The next MCQ, placenta is a connection that develop between the uterine and fetal tissues. Uterine, uterus जो कि मदर की uterus है, और fetal मतलब जो developing fetus है, for exchange of nutrient gases and plasma, waste, milk और water. The right answer is option B. वेस्ट मटेरियल जो होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है. ये तीन काम है, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का और वेस्ट का, ये रिमूवल यहाँ पर होता है. सो द नेक्स्ट MCQ नंबर that is called as the MCQ number 3. The complete end or stop of menstrual cycle is called menarche. Menarche तो फर्स्ट menstrual cycle होता है. menstruation उस पीरियड को बोलते हैं. menopause और parturition बर्थ कहलाती है. सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी. menopause मुकम्मल तौर पे एट द एज ऑफ 40 और 45 ईयर्स में फीमेल्स में जो है वो मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाती है, और उसे मेनोपॉज बोलते हैं. डिक्रीज ऑफ FSH एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन काज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट LH which induce. LH always induce the ovulation, that is the removal of egg from the ovary, always induced by the LH luteinizing hormone. Estrous cycle is a reproductive cycle found in female mammals except इनमें से कौन है जिनमें estrous cycle नहीं होता? बियर, फॉक्सेस, जिराफ, ह्यूमंस में एस्ट्रो साइकिल नहीं होता, बल्कि ह्यूमन फीमेल में मेस्ट्रुअल साइकिल होता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. डैश मेंटेन्स द प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल्स, दैट इज अ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है. इन ह्यूमन फीमेल्स पीरियडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कंप्लीटेड इन 260 days, 9 months, ये तो गेस्टेशन पीरियड है, और 28 days and 3 to 7 days. 3 to 7 days ये इसका टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन का, लेकिन जो कंप्लीट रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल्स के अंदर वो ऑलमोस्ट 28 डेज का होता है. ब्लैंक इज अ येलिश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दैट स्टार्ट्स सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. अभी जब स्टेप्स स्टार्ट किया तो ये फेज स्टार्ट किया तो हमने उसमें कार्पस लूटियम का जिक्र किया है कि वो येलिश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है. मेंस्ट्रुएशन मे लास्ट फॉर 3 to 7 days. 3 से 7 दिन तक जो है रहती है, वेरी करती है ह्यूमंस में, human females में. Only one of the follicles continues to grow with its primary oocyte. बहुत सारी follicle cell अर्ली स्टेज पे पैदा होती हैं due to the production of follicle stimulating hormone, लेकिन उनमें से कोई एक सर्वाइव करता है और बाकी सारे जो है वो degenerate होते हैं by degenerative process. Which one is a degenerative process? Parturition, labor pain, follicle atresia, or ovulation. Follicle atresia is the death of or suicides of follicle cells. So that's why the option C, follicle atresia, is the right answer of this MCQ.
The next MCQ is the total gestation period in human females. 280 days, 9 months, 20 days, and both A and B. Both A and B, 280 days or roughly equal to the 9 months. So the option B, D is the right answer. During delivery in human females, the average loss of blood is how many cubic meter? So it is 350 centimeter cube. So the right answer is the option C. The next MCQ is the from beginning of 3rd month of pregnancy, human embryo is called. This one is called infant, baby, zygote, or fetus. This one is known as the fetus. So option D is the right answer. Next MCQ है lutotrophic hormone secreted by pituitary and placental lactogen secreted by the placenta. Stimulate mammary gland develop for the development in preparation for. मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट क्यों होती है, किस पर्पस के लिए प्रिपरेशन होती है? लैक्टेशन, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. Within blank minutes after birth, the uterus contracts and separates the placenta from the walls of uterus and passes through the vagina called afterbirth. जब बर्थ हो जाती है तो फीमेल्स के अंदर जो कनेक्शन होता है वो यूट्राइन कनेक्शन होता है, वो यूटरस की वॉल्स के साथ अभी भी अटैच है. उसको यहाँ से रिमूव होना जरूरी है. तो कितना टाइम पीरियड लेता है? इट टेक अबाउट द 10 to 45 minutes. So option A is the right answer. Labor pain is induced by hormone. It is induced by the oxytocin. Oxytocin जो है मिल्क इजेक्शन भी करता है और लेबर पेन इंड्यूस भी करता है. ह्यूमन एम्ब्रियोज enclosed and filled by amniotic fluid which is protective and shock absorber. इंक्लोज होता है कोरियन में, नो एमनियन में, एलेटॉइज में या पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम तो हार्ट की थैली है, तो एमनियन जो है उसके अंदर ही एमनियोटिक फ्लूइड होता है और ये प्रोटेक्शन कर रही है. गोनोरिया इज काज्ड बाय Xeria gonorrhea. Option C is the right answer. The next MCQ is syphilis is caused by Treponema pallidum. This one is a spirochete kind of bacteria, or you can say a spiral shaped bacteria. Causative agent of syphilis, it is a bacteria. Yes, Treponema pallidum is a bacteria. The blank damage the reproductive organs, eyes, bones, joints, CNS, heart and skin. Syphilis के अंदर ये इतने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन होती है. So which one is the next MCQ? MCQ is the MCQ number 22. In infected pregnant women, virus can be transmitted to infant, damage birth, causing damage to eyes and CNS. Eyes और CNS कब डैमेज होते हैं, कौन सी बीमारी में होते हैं? वो होते हैं during the herpes simplex, because herpes simplex is a condition that is caused by a virus. But gonorrhea is caused by the bacteria, syphilis is caused by the bacteria, AIDS also caused by virus, but it is caused by the HIV virus. And it mainly affect on the T lymphocyte, T helper lymphocyte to decrease the immunity of a person. So this one is was the next half of chapter number 18, belong to the chapter name is reproduction. So thank you very much. Allah Hafiz.